Hello and welcome. Today in this video lecture, we are going to solve Ghulaman-e-Abbas School Preliminary Examination March 2022 Physics Class 9. So let's come to our first question. In this paper, we have total of 50 MCQs in which 1 to 40 comprises from the theory part and 41 to 50 are from alternate to practical ATP exam. So let's come to our question number 1. The density of the pure water is 1000 kilograms per cubic meter and this value in scientific notation can be expressed as. So अगर हम इसे scientific notation में convert करें, so this will become 1 multiplied by 10 raised to the power 3 kilograms per cubic meter. So the correct answer will be option C, 1 exponent 3 kilograms per meter cube. Then we have question number 2, the number of significant figures in 204.600. So this 2, 4 and 6 are significant and this 0 lie between two significant and these two zeros are the ending 0 of a decimal number. This means that this expression or this value have all the numbers significant. So option D is the right answer. All of the following quantities can be measured by using a vernier caliper. हम वर्नियर कैलिपर की मदद से डेप्थ मालूम कर सकते हैं, लेंथ मालूम कर सकते हैं. We can measure the diameter with the help of a vernier caliper. So correct answer is option C, in which weight cannot be measured with the help of vernier caliper. Option C is our right answer. Then we have question number 5. What is the magnitude of acceleration of the object between 6 to 10 seconds? And we are given with our velocity time graph. तो इस velocity time graph में 6 से लेकर 10 सेकेंड के दौरान यहाँ हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है. We know that यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास बॉडी डिसेलरेट कर रही है. बॉडी की स्पीड जो है वो कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अगर हम यहाँ वेलोसिटी देखें तो इस एट पॉइंट ए द वेलोसिटी इज 4 मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. इसी तरह से अगर इस पॉइंट पे हम फाइनल वेलोसिटी देखें तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम चेंज बिटवीन दिस interval is delta t from 6 to 10. So we know that acceleration is equals to Vf minus Vi over t. So difference in velocity is 0 minus 4 and the time difference will be 10 minus 6. So this will be equals to 4 divided by 6. So 0 minus 4 will be equals to minus 4 and 10 minus 6 is 4. So इस तरह से हमारे पास जो acceleration आ रही है that is minus 1 meters per second square. That the correct answer is option B. Here minus sign shows that the body is decelerating. Now let's come to our next questions 4 and 6. A bus accelerates at 1 meter per second square from the initial velocity of 4 meter per second. So this is acceleration and this is the initial velocity and we have time t is equals to 10 seconds. The total distance covered by the car will be. So we have to find the S in this question. तो यहाँ इस सवाल के अंदर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की एस इक्वल्स वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर ओवर 2. वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया वी आई 4 टाइम 10 एंड एक्सेलरेशन 1. तो इस तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है इट इज 90 मीटर. सो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 6. A ball is dropped. So this means that initial velocity is equals to 0 meter per second. It take 2 seconds to reach the ground. It means time is equals to 2 seconds. And find the height of the cliff. हमें height मालूम करनी है. Whereas g is equals to 10 meters per second square. तो motion under gravity की equation apply करते हैं. H equals V I T plus gt square over 2. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, टाइम इज 2 प्लस g इज 10
टी स्क्वायर विल बी 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी टर्म पूरी 0 हो जाएगी। देन 2 1 is 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास जो हाइट आएगी वो इक्वल हो जाएगी 20 meters. So the correct answer in this question number 6 is option B. Now let's see our next question, that are 7 and 11. Cyclists take a ride of lasting 25 seconds. The diagram shows how distance traveled from the starting position varies with time. What is the average speed of the whole ride? We have to find the average speed. सो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है, स्पीड है कार की, इट इज 0. सो हमें दो पोजीशंस पे, इस पोजीशन ए और पोजीशन बी पे सबसे पहले तो स्पीड मालूम करनी है. पोजीशन ए पे अगर हम स्पीड देखें तो इस ग्राफ ए वाले पोर्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड है इट इज 100 एंड जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 10. यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो 10 सेकेंड है और यहाँ डिस्टेंस 100 है. तो पहली स्पीड हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 100 डिवाइडेड बाय 10. तो पोर्शन ए स्टार्ट में हमारे पास जो स्पीड आएगी वो होगी 10 मीटर्स पर सेकेंड. यहाँ हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 0 है. देन अगर हम पोर्शन बी में देखें तो पोर्शन बी के दौरान जो स्पीड है वो हमारे पास हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो पोर्शन बी में ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास टाइम आ गया. सो यहाँ जो स्पीड है इट इज इक्वल टू 25, डिस्टेंस कवर्ड इज 50 एंड द टाइम इज 10. तो यहाँ से हमारे पास स्पीड आ जाती है 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो सवाल के अंदर थोड़ी सी हम करेक्शन देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल हमें सवाल के अंदर पूछी गई है एवरेज स्पीड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इज 150 meters and total time taken by the cyclist is 25. So total distance divided by total time, it will be equal to 6 meters per second. So correct answer is option A. Then let's see question number 11. The graph shows the movement of a car over a period of 50 seconds. What is the distance covered by the car when it was moving at a steady speed? Steady speed से travel करते हुए what was the distance covered by the car? So as we can see, इन दो पोर्शन के दौरान जो बॉडी ने मोशन है बॉडी का, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी और स्टेडी स्पीड. सो इस दौरान जो डिस्टेंस अगर हमें मालूम करना है तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ. सो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. सो लेंथ हमारे पास हो जाएगी 20 से लेकर 40, दैट इज इक्वल्स टू 20, एंड ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 0 से लेकर 10. सो इस तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इट विल बी इक्वल टू 200 meters. So option C will be our right answer. Let's come to question number 8. A helicopter flies the route below shown. It stopped at I for 30 minutes and pick up some cargo. The total time taken by the helicopter between takeoff from H and landing at L. H से start किया है और L पे आके फिनिश किया, जिसमें हमारे पास यहाँ एक ब्रेक था फॉर 30 मिनट्स. और वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड और ड्यूरिंग फ्लाइंग प्रोसेस के दौरान हमें स्पीड मालूम करनी है. तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दैट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस के लिए हम इनको ऐड कर देंगे, 100 प्लस 50 दैट इज 150 एंड 150 प्लस 100 विल बी इक्वल्स टू 250. सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 250. और टोटल टाइम अगर हम देखें तो टोटल टाइम तो वैसे तो 4 आवर्स था, बट इस 4 आवर्स के अंदर हाफ एन आवर का ब्रेक भी शामिल है. बट सवाल के अंदर हमें कहा है कि स्पीड एवरेज स्पीड मालूम करनी है व्हेन इट इज फ्लाइंग. तो हम 4 से डिवाइड करने के बजाय 3.5 से डिवाइड करेंगे बिकॉज हाफ एन आवर का ब्रेक मौजूद था.
तो हम क्या करें, 250 जो कि टोटल डिस्टेंस है और 3.5 जो कि फ्लाइट के दौरान का टाइम है, इसे आपस में डिवाइड कर दें. सो वी विल गेट 71.4 किलोमीटर पर आवर. So our right answer is in option C. Then see question number 12. We place some coins over a paper strip and then pull it with a jug. These coins will not fall. So कुछ इस तरह की बात हो रही है कि यहाँ हमने एक स्टैक ऑफ कॉइन्स जो है वो प्लेस कर दिया इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर. अगर हम इस पेपर स्ट्रिप को स्लोली पुल करते हैं तो ये जो स्टैक ऑफ कॉइन है विल मूव विद द स्ट्रिप ऑफ पेपर. अगर हम इसे पुल करते हैं विद अ जग, सडनली पुल कर लेते हैं, सो कॉइन्स का जो स्टैक है इट विल रिमेन एट इट्स पोजीशन ड्यू टू इट्स इनर्शिया. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Which of the following quantity must be changing when a body is accelerating? अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो कौन सी क्वांटिटी है जो कि चेंज हो रही होगी? सो वी नो दैट एक्सेलरेशन मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी. बॉडी की वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो इट्स मीन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. ऑप्शन डी इन दिस केस इज द राइट आंसर. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. How long would it take to change? How long means we have to find the time to change the momentum of a body from 50 ns to 80 ns when a force of 10 Newton is applied. So we have change in momentum, we have time, we have force. तो हम time को calculate करते हैं. That force is equal to rate of change in momentum. So time will be equals to delta P over F. So change in momentum is 30 and the force is 10. So time will required will be 3 seconds. So the correct answer will be option B. Let's see question 9 and 10. If we increase the velocity of the body 3 times, what will happen to the centripetal force? So let's see the relation between the centripetal force and velocity. Fc is equals to mv square over r. तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान. सो एज वी कैन सी द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द v. तो इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 3 टाइम्स, वेलोसिटी अगर हम 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, सो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 3v स्क्वायर. एंड इसको फर्दर सॉल्व करें तो f प्रोपोर्शनल होगा 9v. सो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 9 टाइम्स. Option C is the right answer. A truck is moving on a level road, applies a brake. What should be the acceleration of the truck? So as we can see, brakes apply कर रहे हैं. Brakes apply करने से जो velocity है, velocity जो है वो decrease हो जाती है और velocity decrease होने की वजह से body has negative acceleration. Body की जो acceleration है वो negative होती है. So the correct answer is option D. Then we have our next questions. A bus drive along a flat road. Its engine force is 7,000. Drag force is also acting on the bus. The bus has the acceleration of 1.2 and a mass of 2,500 kilograms. So this is mass and this is acceleration. So सबसे पहले तो हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. रिजल्टेंट फोर्स जो कि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है. फोर्स विल बी इक्वल्स टू ma. Mass is 2500 times 1.2 acceleration. So 2500 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. We will get 3000. That is the net force. नेट फोर्स, टोटल फोर्स इस पे लग रही है 7000 न्यूटन. जो नेट फोर्स है वो है 3000 न्यूटन. दिस मीन्स दैट कि जो ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स है इट विल बी इक्वल टू 4000 न्यूटन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. A car of mass 1000 kg moves on a circular path of radius 50 meters. So we have a mass, we have a radius, and we have a speed. We have to calculate the centripetal force. F equals to mv square over r. So values को substitute कर देते हैं. मास की जगह 1000 आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह 25 स्क्वायर आ जाएगा और रेडियस की जगह हमारे पास 50.
सो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल गेट 12,500 न्यूटन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Let's see question number 20. The diagram shows a boy weighing 500 Newton. So boy का जो weight है it is 500 Newton sitting on a seesaw 2 meter from the pivot. So ये अगर force है तो ये हमारे पास moment arm हो जाएगा जिसको हम D से represent करते हैं. And other forces acting on this rod to balance at 4 meter away from the pivot. तो ये हमारे पास एक और फोर्स हो गई तो इसे हम बोल देते हैं डिस्टेंस D2. दिस इज D1, दिस इज F1, दिस विल बी F2. सो इफ दिस इज बैलेंस, सो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ जो टॉर्क है वो बराबर होना चाहिए. F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2. F1 हमने इस वेट को कहा था, सो दिस इज 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. F2 हमें मालूम करनी है और डिस्टेंस है हमारे पास 4. तो 4 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं. So 500 multiplied by 2 is 1000 divided by 4. So F2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 250 न्यूटन. सो इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन को 250 न्यूटन की फोर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द पाइवट अप्लाई करके हम इस पर्सन को इस सीसॉ के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं. Let's see question number 16. If the contact of rotation of the rotating stone attached with the string breaks, then in which direction will the detached stone will move? So it will move in the direction of velocity. जब इस स्ट्रिंग का कोई एंड ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद जो स्टोन है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ से टेंजेंट डायरेक्शन में मूव करेगा ये. सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर कि इस पोजीशन में अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे स्टोन अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, एंड इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. Which property of the body resists the change from the state of rest or motion? This is the definition of inertia, that it is a property of a body that changes or that resists the change from state of rest into the motion. So option B is the right answer. Then we have question number 21. If a nut and bolt are difficult to undo, it may be easier to turn the nut by using a long spanner. लॉन्ग स्पैनर को यूज करके वी कैन इजीली अनस्क्रू द नट और बोल्ट सो दैट इट प्रोड्यूस लार्ज मूवमेंट आर्म. लार्ज मूवमेंट आर्म यूज करने से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इट विल प्रोड्यूस लार्ज टर्निंग इफेक्ट. Let's come to question 18 and 22. Which of the following is a Newton's second law of motion? So Newton's second law of motion states that resultant force always produces an acceleration in the body. So option C is the right answer for the statement of the second law of motion. A student balances a non-uniform object on a pivot. To do this, a weight is suspended near the left end of the object. Where is its center of mass? We know that whenever a body is balanced at its center of mass, body do not produce any turning effect. So यहाँ हमने pivot को place किया है इस point के पास, तो ये जो reaction force apply हो रही है pivot की इस object के ऊपर, it do not produces any रोटेशन. सो दिस मीन कि जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी बैलेंस होती है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं. सो यहां इस डायग्राम में ऑप्शन सी जो है वो सेंटर ऑफ मास है. देन लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. Which of the following is not measured in pascals? किस क्वांटिटी का यूनिट पास्कल्स नहीं है? Strain is Young modulus is measured in pascals. Stress and pressure are measured in pascals, जबकि strain has no unit. So strain का कोई यूनिट नहीं होता. Strain is not measured in pascals. Option D is the right answer.
To prevent a cement mixer from sinking into the soft ground, it is placed on a large flat board. इस मशीन को सॉफ्ट ग्राउंड में सिंक होने से बचाने के लिए हमने इसे प्लेस किया एक लार्ज बोर्ड के ऊपर. सो लार्ज बोर्ड पे प्लेस करने से क्यों सिंक नहीं होगा? सो लेट्स सी द ऑप्शंस वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन. सो सिंक होने का मतलब है इट प्रोड्यूसेस मोर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर होगा, इजीली सिंक कर जाएगा. सो इट्स मीन कि अगर हमने लार्ज फ्लैट एरिया यूज किया है, इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया दैट विल रिड्यूसेस द प्रेशर. सो लार्जर एरिया डिक्रीजेस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ज्यादा एरिया है इस प्लेन का, जिसकी वजह से जो प्रेशर डिवाइड होगा सरफेस पे वो कम हो जाएगा. सो ये सीमेंट मिक्सचर इजीली इसमें सिंक नहीं कर पाएगा. Then we have question number 27. The 4 wet towels are hung out to dry soon. Which towel dry out most quickly? कौन सा towel जल्दी dry हो जाएगा? So we know that in this question or example evaporation का process occur होगा और evaporation के process के factors identify करने के वेदर सनी होना चाहिए और विंडी होगा, सनी भी होगा, विंडी भी होगा और साथ साथ अनफोल्डेड भी होगा. तो इससे ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है उसको इंक्रीज करते हैं. सो इन दिस वे आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. Let's see question number 24. All of the following statements are the features of kinetic molecular theory of matter. So we have 3 points that are present in the kinetic molecular model, except this option D. Pressure becomes zero when molecules collide with each other. This one, and the third one. These three are the basic points or the postulates of kinetic molecular model. So our option D is the right answer. Question number 28. In this experiment, a saucer of water is left outside to evaporate. Which law shows the weather condition that will cause the rate of evaporation from the saucer to increase? So, warm temperature and the windy condition will increase the rate of evaporation. Option A is the right answer. Let's say question number 25. A block of 900 Newton has a rectangular face. The diagram shows the length and size of the block. The block can rest on any of its face. What is the minimum pressure that the block can exert on the ground when it is resting on one of its face? So अगर इस rectangular block को अगर हम ground पे इस तरह से place करते हैं, तो इस तरह place करने से जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज्यादा होगा. ये वो सरफेस एरिया है जो कि ग्राउंड के साथ टच हो रहा है और इस केस के अंदर जो है वो प्रेशर सबसे कम होगा. अगर हम इस फेस के साथ रखते हैं ग्राउंड के ऊपर, इसको यूं वर्टिकल स्टैंड करते हैं, तो उस केस के अंदर एरिया कम होगा तो प्रेशर उससे ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ प्रेशर कैलकुलेट भी कर लेते हैं. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया. फोर्स इज इट्स वेट फोर्स 900 Newton, and area will be equal to length multiplied by breadth 0.5 times 0.4. So the result will be 4500 newtons per meter square. Option B is the right answer. Let's come to our next question, question number 29. The substance can change from one state to another as shown. तो यहाँ हमारे पास solid, liquid और gas ये 3 states मौजूद हैं और conversion process given है. Solid to liquid melting, liquid to gas boiling, and the reverse processes are condensing and freezing. We know that ये दोनों स्टेट जो है वो हीट को गेन करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी हीट को, जबकि ये जो दो प्रोसेसेस हैं फ्रीजिंग एंड कंडेंसिंग, इन दोनों में हीट रिलीज होगी. सो एनर्जी टेकन इन इज इन ऑप्शन ए and given out is 3 and 4. So option A is the right answer. A person cannot unscrew the metal lid of a pot of a jam. So अगर ये lid tight है, unscrew नहीं हो रही, so we can put warm water ताकि वो lid
वो lid जो है वो heat up होके expand हो और we can easily unscrew the lid of the jam. So the correct answer will be option D, जिसमें metal lid heat up होके expand हो जाएगा. Then we have question number 30. A mechanic cannot remove a large steel nut from the steel bolt because it is too tight. What could the mechanic do to help her remove the nut? तो इस नट को अगर इस बोल्ट के ऊपर से रिमूव करना है तो हम इस नट को हीट कर सकते हैं ताकि ये एक्सपेंड और आसानी से ओपन हो जाए. तो वी कैन हीट द nut only. If the temperature of the both end of the copper rod is 70 degree, so अगर एक कॉपर रॉड है हमारे पास और कॉपर रॉड के दोनों एंड्स का जो टेम्परेचर है वो सेम है, then how much heat will be transferred? The mass of the rod is 10 kg and specific heat of copper is this. So we know that जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के. जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा उतनी ज्यादा तेजी से हीट फ्लो करेगी फ्रॉम वन एंड टू दी इन अदर end. So in this particular case, in this particular question, the both end of the copper are at same temperature. It means there will be no transfer of heat in these two ends of the copper rod. So option C will be the right answer, that is 0. If the temperature of an object is minus 40 degree Fahrenheit, then its temperature in centigrade scale is. So we know the relation centigrade scale is equals to, Fahrenheit scale F is equals to 1.8 C plus 32. तो C की जगह हम -40, F की जगह हम -40 पुट कर देते हैं, -40, 32 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और 1.8 डिवाइड हो जाएगा. सो यहां से आंसर हमारे पास आ जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड. सो -40 Fahrenheit is equals to -40 degree centigrade. Option C is the right answer. If the temperature of both the ends of the rod is same, then the rate of flow of heat will be 0, as we have discussed in the previous question. कि दोनों केस, इस केस में भी अगर टेम्परेचर जो सेम है किसी भी कंडक्टर का या रॉड का तो उनके दरमियान कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी. Let's see question number 35. Is question number 35 में a coil or the heated rod is placed inside the water, then heater is switched on. So what will happen at the liquid X? तो point X के ऊपर क्या होगा? We know that it's हीटर की वजह से इसके सराउंडिंग में जो वाटर मौजूद है वो हीट अप हो जाएगा. हीट अप होने से मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड विल एक्सपेंड होने से डेंसिटी कम हो जाएगी एंड लेस डेंस लिक्विड विल मूव अपवर्ड इन दिस बीकर. सो option B will be the right answer, that it will become less dense and will move upward. Then we have question number 36, जिसके अंदर हमारे पास एक हीटर मौजूद है रूम में और रूम में एक डोर मौजूद है. What will happen to the air as it is heated by the heater? So जिस तरह लिक्विड हीट अप होके लेस डेंस होके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से तो यहाँ जो एयर मौजूद होगी वो एयर लेस डेंस हो जाएगी और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. सो इट्स डेंसिटी डिक्रीज एंड इट विल राइज. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास एक मैच स्टिक मौजूद है और इस मैच स्टिक के करीब में हमारे पास एक थर्मोमीटर मौजूद है और यहाँ पर एयर है इन दोनों के दरमियान. तो कौन से मेथड के थ्रू हीट विल रीच टू दी थर्मोमीटर फ्रॉम दिस मैच स्टिक? सो we know that air is a bad conductor, so conduction possible नहीं है and एयर के थ्रू कन्वेक्शन हो सकती है बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन कन्वेक्शन इज ऑलवेज अपवर्ड. तो यहाँ से जो हीट है वो अपवर्ड मूव करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. सो कन्वेक्शन का प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है. सो द ओनली मेथड थ्रू व्हिच द हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस मैच स्टिक टू द थर्मोमीटर इज रेडिएशन. इस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर हो रही है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Then let's see question number 37. Wall of the vacuum flask contain 2 layers of glass separated by the vacuum. So by which method
this vacuum prevents the heat transfer. So we know that vacuum का मतलब होता है ना heat, no solid, no liquid, no gas. If there is no solid, no conduction is possible. If there is no liquid or gas, this means there is no convection possible through vacuum. So ये जो vacuum place किया जाता है thermostat में, it prevents the transfer of heat by conduction and convection because these two processes require some medium. Option D is the right answer. Which row correctly describe the conduction of heat and the convection of heat? So conduction of heat only occurs in solid while convection of heat occurs in liquid and gases. So option B is the right answer. Let's see the last question of this theory part. A hot liquid is poured into a beaker. The graph shows how temperature changes as it is cooled down to the room temperature. Which process take place at region X? तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब है वहां पर चेंज ऑफ स्टेट का प्रोसेस चल रहा है. और यहाँ हमें कहा था कि हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू दी बीकर. तो इट्स मीन कि यहाँ हमारे पास लिक्विड मौजूद था और लिक्विड का टेम्परेचर फॉल होते होते जब यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आया तो फ्रीजिंग पॉइंट पे ये जो सब लिक्विड था वो कन्वर्ट होने लग गया सॉलिड के अंदर. इट्स मीन यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर. सो बॉइलिंग का प्रोसेस यहाँ नहीं हो रहा. इट्स मीन दिस इज इनकरेक्ट. कंडेंसेशन इज द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड. ये भी इनकरेक्ट प्रोसेस है. सिर्फ इवेपोरेशन और ऑप्शन डी में हमारे पास सॉलिडिफिकेशन आ रहा है. इट्स मीन ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सॉलिडिफिकेशन भी हो रही है और यहाँ लिखा हुआ है एंड इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर. इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देन वी हैव द ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल पार्ट जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 41 से लेकर 50 तक मौजूद है. सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर 41 क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्रू गॉज मौजूद है और इस स्क्रू गॉज का हमें लीस्ट काउंट बताना है. सो वी नो दैट स्केल इसका मिलीमीटर में होता है एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज 0.01 मिलीमीटर. 0.01 मिलीमीटर. तो ये लीस्ट काउंट होता है एक स्क्रू गॉज का. तो थोड़ी सी करेक्शन कर दें उसके सॉल्व करने की टेक्निक को. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. सो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल पे होता है स्क्रू गॉज के अंदर इट इज 1 millimeter and the total number of division on the circular scale are 100. तो इस तरह से हमारे पास 0.01 millimeter becomes the least count of screw gauge. Option B is the right answer. Suppose that at a particular point in a planet X, the mass of the object is measured as 0.7 kilogram and its weight is measured as 10 Newton. वेट जो है वो 10 न्यूटन है और मास जो है वो 0.7 किलोग्राम है. सो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और g एट दैट पॉइंट विल बी. सो वेट का फॉर्मूला वी नो दैट w इक्वल्स टू mg. सो g विल बी इक्वल्स टू w ओवर m. सो वेट इज 10 डिवाइडेड बाय मास इज 0.7. तो 10 को हम डिवाइड कर देते हैं 0.7 से. सो वी विल गेट 14.2 meters per second square acceleration due to gravity at that point. So option D is the right answer. Let's see the next question. The given picture shows the velocity time graph of the acceleration of the motion of the body. Which of the following option represents the total displacement covered by the body? So total displacement का मतलब है कि हम
इस पूरे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे एंड एरिया ऑफ द ग्राफ विल कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट. ये अगर हमारे पास ट्राइंगल का एरिया, देन हमारे पास ये जो दूसरा रेक्टेंगल है इसका एरिया, इन दोनों एरियाज को अगर हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी. सो द एरिया ऑफ rectangle ABCD and the triangle DCE. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. A student has been asked to determine accurately as possible the volume of the piece of wire. The wire is about 80 centimeter long, that is length, and diameter is 0.2 centimeter. So ये दोनों measurement लेने के लिए 80 centimeter that can be measured with the help of meter ruler and 0.2 centimeter can be measured with the help of vernier screw gauge, micrometer screw gauge. So in this way, option A is the right answer. Let's see question number 43. If a ball is thrown vertically upward, then the acceleration due to gravity and the velocity of the ball at the highest point will be. हमें पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, लेट्स सपोज हमने यूं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और वी कैन टेक दिस लीनियर पाथ ले लेते हैं. हमने उसे अपवर्ड डायरेक्शन में यूं थ्रो किया तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड के लिए बॉडी स्टॉप हो जाती है, देन इट अगेन स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड. सो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जबकि जो एक्सेलरेशन है इट रिमेन्स एट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज जी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 47 एंड 44 देखते हैं. The diagram shows an unbalanced rod. Two loads X and Y can be moved along the rod. The rod turns in a clockwise direction. Rod जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है, तो इसे हमें बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन ज्यादा है, तो या तो हम इस ब्लॉक को थोड़ा करीब कर दें या फिर हम इस ब्लॉक एक्स को थोड़ा सा दूर कर दें ताकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क कम हो सके. बैलेंस करने के लिए या तो क्लॉकवाइज टॉर्क इस रॉड का हमें कम करना होगा या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ाना होगा ताकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों आपस में बराबर हो जाएं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बाय मूविंग एक्स टू द लेफ्ट we can increase the anti-clockwise direction torque and the rod can be balanced. An empty truck has a weight of 50,000 Newton. The forward force is 6,000 and the total resistive force is 2,000 Newton. So the forward force जो इसके ऊपर लग रही है it is 6,000 Newton. और जो रेजिस्टिव फोर्स है फ्रिक्शन की और ड्रैग फोर्स की इट इज 2000 न्यूटन. सो दिस मींस दैट इस ट्रक का जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो हो जाएगी 6000 माइनस 2000. तो इस तरह से हमारे पास 4000 न्यूटन की फोर्स है जो कि इस ट्रक के ऊपर अप्लाई हो रही है. हमें मालूम करनी है एक्सेलरेशन and acceleration is equal to force over mass. तो फोर्स जो हमने कैलकुलेट कर ली इट इज इक्वल टू 4000 न्यूटन. मास कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से वेट का यूज करते हैं. m इज इक्वल टू w ओवर g. So weight is 50,000 divided by g, that is 10. So 10 से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं तो इसका जो मास है वो हमारे पास आ जाएगा 5000 किलोग्राम. मास इज इक्वल टू 5000 केजी. तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 5000 kilogram. So these 3 zeros and 3 zeros will be cancelled out. So the acceleration will be equals to 4 over 5, that is 0.8 meter per second square. Option A is the right answer. Then let's see the last question of this year. In summers, temperature of sand rises more quickly as compared to the sea water, and this is due to the low specific heat capacity of sand, जिसकी वजह से sand का temperature
क्विकली राइज हो जाएगा, जबकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से वाटर इतना जल्दी हीट अप नहीं होता। Then we have question number 48. If the weight of an object is measured 10 Newton and 8 Newton in air and water respectively. So this is weight in air and this is the weight in water. The density of the object हमें मालूम करनी है and we have the density of water जिसको हम rho से represent कर सकते हैं या density of water से represent कर सकते हैं। So इस सवाल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है दैट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ वेट टाइम्स डेंसिटी। सो यहाँ हमने डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लगाया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का दैट डी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तमाम वैल्यूज हमारे पास सवाल में गिवन थी। वेट इन एयर इज 10, वेट इन वाटर इज 8। तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से वी गेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 5000 kilograms per cubic meter. Then we have the last question of this year. The amount of heat absorbed by 1 kilogram of water at 100 degrees centigrade. So we know that 100 degrees centigrade is the boiling point and the heat absorbed by the liquid at its boiling point is known as heat of vaporization. And if we talk about 1 kilogram of liquid, so this heat is known as latent heat of vaporization. Correct answer is option D.